Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics, exercise 12A for new syllabus mathematics D3x4 for A-level, O-level students. And question number 1 is, find the unknown area of the following pairs of similar figures. And students, in A part, there are two triangles, two similar triangles. One triangle is larger and other is smaller. And area of larger triangle, I mean to say that area of larger triangle A1 is 64 centimeters square. Whereas area of triangle 2 we have to find. And length of triangle A1, and we can say that L1 is 8 centimeter, whereas the length of triangle 2, that is L2, and it is 2 centimeter, and we have to find area of triangle 2. There are two similar figures. You can watch those, you can see those two triangles on the book. So I am not going to draw the diagram. Keep in mind that the area of two similar triangles, the ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of corresponding sides of that triangle. So students, it is a formula. You have to learn that the ratio of the area of similar triangle is equal to the square of the ratio of the corresponding side. So students, the formula is A1 over A2 is equal to L1 over L2 whole square. So students, area of triangle 1 is 64. So here I will write 64 centimeter square, and I need not to write centimeter square because it is understood that when we find the area of triangle 2, that will be in centimeter square. So I just write 64 over A square. So not A square, A2 is equal to length 1 is 8, whereas length 2 is 2. And students, its square to 1 are 2, 2 4s are 8, and 64 over A2, that is equal to 4 square. And students, 4 square means 64, and 8, 2 is dividing on left side. When I transfer it to other side, it will multiply. And students, 64 will be equal to 16 multiplied by area of triangle 2. 4 square mean 60, 16 because 4 multiplied by 4 mean 16. And 16 is multiplying with A2. When we transfer it to the side, it will divide and written as 64 over 16 is equal to area of triangle 2. 16 1s are 16 and 16 4s are 64. So area of triangle 2 is 4 centimeter square. And it is the A part of question number 1. Students, now I am going to solve B part of the same question, and I am going to explain this question in Urdu so that you can understand easily. Students, B part, there are two cylinders, you can say, and the A1 we have to find, whereas area 2 is given, that is 0.6 meter square, whereas base, or you can say that length of L1 is 0.4 meter, whereas length 2 is 0.2 meter. Students, these two figures are again similar, और अगर सिमिलर फिगर हैं तो जो उनके एरिया की रेशियो है वो इक्वल होगी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के. दोबारा इस चीज़ को समझें कि अगर टू सिमिलर फिगर्स हैं तो उनके एरियाज की जो रेशियो है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगी. यानी कि ये इस तरह हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ फिगर 1 over area of figure 2
ये इक्वल होगी लेंथ ऑफ फर्स्ट फिगर सिमिलर फिगर ओवर लेंथ ऑफ सेकंड सिमिलर फिगर एंड इट्स स्क्वायर। दोबारा इस फार्मूले को समझने की कोशिश करें कि अगर टू सिमिलर फिगर्स हैं तो उनके एरिया की जो रेशियो है, फ्रैक्शन को हम रेशियो में भी लिख सकते हैं और रेशियो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो सिमिलर फिगर्स के एरियाज की जो रेशियो है वो उन्हीं फिगर की कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। ये नहीं लिखना कि A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L2 ओवर L1, यानी कि रेशियो का मतलब होता है कि 2:3 डज नॉट इक्वल टू 3:2। तो इसको आपने माइंड में रखना है। अभी एरिया 1 हमने फाइंड करना है, फर्स्ट फिगर का एरिया हमने फाइंड करना है, तो उसको हम A1 ही लिखेंगे ओवर A2 बच्चों गिवन है दैट इज 0.6, और यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो उसका यूनिट भी मीटर स्क्वायर ही होगा। इज इक्वल टू लेंथ 1 है जो बच्चों वो है 0.4 ओवर जो लेंथ 2 है वो है 0.2 और इट्स स्क्वायर। अब बच्चों ये आ जाएगा एरिया ऑफ 1 0.6 इधर मल्टीप्लाई का डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये इसको हम लिखेंगे 0.6 इंटू 0.4 का पॉइंट खत्म करने के लिए हम डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.2 का पॉइंट खत्म करने के लिए हम न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये दोनों के पॉइंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कैंसिल होंगे, तो इसको हम लिखेंगे 0.4 ओवर 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 10 होल स्क्वायर। ये जीरो भी लेफ्ट साइड पर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो ये फिर भी करेक्ट है। और ये हमने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर का पॉइंट खत्म करने के लिए हम न्यूमरेटर में 10 लिखेंगे और न्यूमरेटर का ये पॉइंट खत्म करने के लिए पॉइंट के राइट साइड पर सिर्फ 1 डिजिट है, तो हम डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे। तो बच्चों ये पॉइंट खत्म हो जाएंगे, 10 10 से कैंसिल होगा, 10 1 जार 10 10 1 जार 10, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4। So area of first figure that is equal to 0.6 into 2 1 that 2 over 1 2 square। अब बच्चों 2 square mean 4, तो इसको हम लिखेंगे 0.6 into 4, और जब हम 4 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 2.4, और चूंकि एरिया का यूनिट यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो इसका एरिया भी मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इट इज पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। Now I am going to solve C part of the same question, and in C part again there are two similar figures. In C part again students there are two similar rectangles and the area of A1 is 125 centimeter square, whereas area of rectangle 2 we have to find, whereas length of first rectangle L1 I should say it that is 15 centimeter, whereas corresponding length of the other similar figure is 6 centimeter। और स्टूडेंट्स हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि एरिया की जो रेशियो है वो इक्वल होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर की। तो इसका हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल स्क्वायर। A1 is given that is 125 centimeter square, so in place of A1 I will write 125 centimeter 125 just, so it is written as 125 over A2 I have to find, whereas length 1 is 15 and length 2 is 6 and its square. Now students 15 and 6 can be cancelled with the table of 3, 3 2s are 6 and 3 5s are 15, and it will be 125 over A2 is equal to 5 square mean 25 and 2 square mean 4.
Now students, as we have to find the value of A2 and A2 is denominator on left side, so we will do cross multiplication. Cross multiplication mean कि लेफ्ट साइड का जो डिनोमिनेटर है वो राइट साइड के न्यूमरेटर से और राइट साइड का जो डिनोमिनेटर है वो लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 125 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाय 25। और बच्चों 25 राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये डिवाइड करेगा। तो ये आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 25 इज इक्वल टू A2। 25 और 125 5 के टेबल से भी और 25 के टेबल से भी कैंसिल होता है, क्योंकि 25 5 जार 125 होता है, 25 और 1 जार 25 और 25 5 जार 125 आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। और अगर आप 5 के टेबल से कैंसिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 2 कैरी एंड 5 5 जार 25 एंड देन 5 1 जार 5 एंड 5 5 जार 25। So 5 4s are 20 is equal to A2, or you can say that area of second figure is equal to 20 and the unit of area is centimeter square। और ये था बच्चों सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी मैं सॉल्व करूंगा डी पार्ट इसी क्वेश्चन का। तो डी पार्ट है स्टूडेंट्स, अगेन देयर आर two trapezium and area of first trapezium, that is D part, A1 is given, A1 we have to find, whereas length of first figure is 12 centimeter, whereas area of figure 2 that is 48 centimeter square and the length of figure 2 that is 8 centimeter। Now students, same formula will be applied again कि एरिया की जो रेशियो है, दोनों सिमिलर फिगर के जो एरियाज की रेशियो है वो उन्हीं के सिमिलर फिगर की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यह आएगा बच्चों A1 ओवर A2 दैट इज इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल स्क्वायर। इस फार्मूला को बच्चों आपने माइंड में रखना है कि जो एरिया की रेशियो है दोनों सिमिलर फिगर की वो इक्वल होगी दोनों फिगर की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। तो ये बच्चों हम फार्मूला लिखेंगे, इसमें भी वैल्यूज पुट करेंगे। तो A1 भी हमने फाइंड करना है, तो A1 को एज इट इज लिखा जाएगा, वेयर एज द वैल्यू ऑफ A2 इज 48। we need not to write the unit because we will write the unit at the end, and we know that the unit of the area is square, so at that we will write centimeter square, and that is equal to length 1 is 12 whereas length 2 is 8 and its square। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बच्चों 4 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, तो यह आएगा 4 2s are 8 4 3s are 12 और एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर विल बी इक्वल टू 48 क्योंकि 48 लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा इनटू 3 ओवर 2 स्क्वायर। और बच्चों 48 इंटू 3 स्क्वायर मीन 9 whereas 2 square mean 4 and 4 1s are 4 4 1s are 4 and 4 2s are 8। तो 12 into 9 and when we multiply 12 with 9 we will have 9 2s are 18 and 1 carry, 9 1s are 9 and 1 10। So area of first figure is 108 centimeter square। And students, it is D part of question number 1. Now I am going to solve E part of the same question, and students, E part is E part. Again students, there are two figures, two similar figures, and area of first figure is 12 centimeter square, whereas the top of the figure, or you can say the curve of the figure is L1 and that is 4 meter, whereas area 2 we have to find,
and length 2 is 6 meter. Now students, same formula will be applied again कि इन दोनों के एरियाज की जो रेशो है वो इन दोनों फिगर की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे A1 ओवर A2 इज इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल स्क्वायर। एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर इज गिवन दैट इज 12, so it is written as 12 over A2 that we have to find, whereas L1 is 4 and L2 is 6 and their square, 2 2s are 4 and 2 3s are 6, so it is written as 12 over A2 is equal to 2 square mean 4 and 3 square mean 9. Here we will do BCM and 4 will multiply with A2, whereas 9 will multiply with 12, and it is written as A2 multiplied by 4 is equal to 9 multiplied by 12. And students, 4 is multiplying with A2, and when we transfer it to other side it will divide, and the value of area of second figure will be 9 multiplied by 12 over 4, 4 1s are 4, 4 3s are 12, and area of second figure is 9 3s are 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बच्चों ई पार्ट, और अब मैं करने जा रहा हूँ लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का। और लास्ट पार्ट में बच्चों 2 ट्राइंगल्स है, राइट एंगल ट्राइंगल्स, और उसमें भी हमने एरिया एक फिगर का फाइंड करना है, और ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं। सिमिलर फिगर्स स्टूडेंट्स वो फिगर्स होती हैं जिनकी शेप सेम हो लेकिन साइजेस डिफरेंट हों। तो A1 इसमें गिवन है वो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेयरएज जो लेंथ 1 है वो है 6p सेंटीमीटर, वेयरएज एरिया ऑफ सेकंड फिगर वी हैव टू फाइंड, एंड लेंथ ऑफ सेकंड फिगर दैट इज 3p सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेकंड फिगर। बच्चों इस बात को आपने जेब में रखना है, बार बार एक ही फार्मूला आपको बता रहा हूं कि सिमिलर फिगर के एरियाज की जो रेशियो है वो इक्वल होती है उन सिमिलर फिगर की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। रेशियो को हम फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को हम रेशियो में लिख सकते हैं। तो यह आएगा बच्चों A1 over A2 is equal to length 1 over length 2 whole square. Area of figure 1 is given, that is 24 over A2 we have to find, whereas length 1 is 6p centimeter and the length of L2 is 3p centimeter, and centimeter is not written. P will be cancelled with P. 3 1s are 3 and 3 2s are 6, and we have to take the square because the ratio of the areas of similar figure is equal to the square of the ratio of the sides of the similar figures. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने स्क्वायर लगाना था। तो ये आएगा बच्चों 24 ओवर A2 is equal to 2 over 1 square, and when we take the square of 2 it will be 4, and when we take the square of 1 it will be 1, so we need not to write 1 as denominator। और बच्चों A2 जो है वो लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई करेगा। तो ये आएगा 24 is equal to 4 multiplied by A2, as we have to find the value of A2, so we will transfer this 4 to other side and it will divide, and written as 24 over 4 is equal to A2, 4 1s are 4 and 4 6 are 24, so the area of second figure is 6 centimeter square। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सब क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द आपकी एम्बिग्विटी को दूर किया जाए। और आखिर में हमेशा की तरह मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे
और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।